है. So let us continue our discussion. All right. तो हमें actually exam आगरू we were focusing on HTML. ठीक है जी. हमें we were looking at HTML. I think November 1 रे गोटे हम क्लास करथिलु जोटा we had a look at the introduction. है HTML how you can the basics. Okay. तो टिके हमें रिवाइज करबा since almost 1 week gap है जाय टिके हमें रिवाइज करबा तापर we will continue our discussion. ठीक अछि. तो हमें basically हमें कौन कलो is we took up a text है ओके हमें टेक्स्ट नहीं कि एटा तुम देखो ये टेक्स्ट हमें नहीं कि हमें ताकू डिफरेंट HTML ताकू एलिमेंट्स रे ऐड करिछु. So what did we do here? So basically this was the default view. एटा हमर डिफॉल्ट व्यू थिला आउ आकु हमें एथिरे हमें HTML ऐड करिछु आउ तापर ताकु देखि. अच्छा ता आगु व्हाट डिड वी डू इज हमें देखिलु दैट नॉर्मली टेक्स्ट ओके सो एक टेक्स्ट को हमें नहीं पारिबो ओके व्हाटएवर हमर टेक्स्ट अछि दैट हमें नहीं कि हमें डायरेक्टली ताको HTML रे रखि पारिबो. फॉर एग्जांपल ए जो कंटेंट तुम देखो जो एठी ओके सो we can also take this. This is actually an example of ଗୋଟେ text हमको दिया है जी से text हमको नहीं कि ताको HTML रे देखेबार अछि. ओके सो ये हमें देखिबा ଗୋଟେ मिनट दिया मते. ओके ऑलराइट. So this is the empty text that is given. एटा हम text file रे रखिछ तुम हला. So ताको हमें एटा हमें suppose abc.txt गोटे फाइल अछि abc.txt भितर हमें एटा रखिछ. ठीक अछि कमे दवा. So we have kept this in abc.txt. Okay. Now आपको simply हमें copy करके paste if we do okay paste it in an HTML page रे. So it will look like this. It will look like this. So basically कौन देखो जहाँ हमें एठी लिखि थिलु जहाँ भी एठी थिला से सब एठी एठी दे देछ हला. But what you see here is that the text runs together. माने जहाँ भी हमें स्पेस दे थिलु तो किछि नाही एठी केतरा गोटे स्पेस देछु एठी न्यू लाइन एठी स्पेस न्यू लाइन तो एमती हमें देछु बहुत बड़ा स्पेसेस हमें देछु एठी. बट if you look at the display what the HTML जहाँ देखा जाउछ ब्राउजर एटा किछि भी नाही एथि किछि भी देखा जाउना एवरीथिंग गोटे एका संगरे पळे आछे. सो लाइन ब्रेक्स आर इग्नोर्ड जहाँ भी हमर न्यू लाइन कैरेक्टर अछि एवरीथिंग इज इग्नोर्ड ओवर हियर. ठीक अछि. सो व्हाट डज द ब्राउजर इग्नोर व्हाट ऑल थिंग्स द ब्राउजर इग्नोर्स मल्टीपल व्हाइट स्पेस देले भी ताकू HTML हम ब्राउजर रिकॉग्नाइज करबोनी कि न्यू लाइन कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करबोनी कि टैब्स को रिकॉग्नाइज करबोनी. नाइदर डज इट रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज्ड मार्कअप हैला. हमें बिकॉज HTML पढु छ हमें कोन तार फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. सो हमें वी आर रीडिंग अबाउट मार्कअप. सो इफ हमें किछि मार्कअप एमती यूज करू छ जोटा ब्राउजर रिकॉग्नाइज करूने चिन्ह पारुने सो इट विल इग्नोर that over. से जहाँ अच्छे सेटा डायरेक्टली सेटा डिस्प्ले कर दो हैला. हम गोटे we focused on markup गोटे जिंस तार बेसिक्स रे when we were looking at we saw that the text must be marked up meaningfully and accurately हैला. माने there should be a semantic mean तार गोटे meaning थिबा कथा. there should be a meaning काहे कि we are using heading कि काहे कि हम पैराग्राफ काहे कि दोछु तको तो एवरीथिंग शुड बी हैविंग अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड शुड बी वेरी एक्यूरेट हैला. एटा करले हमर कोन हो सिमेंटिकली हम इफ जो हमर मार्कअप हम ऐड करछु इफ इट इज सिमेंटिक आई मीन देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड दैट. सो दिस विल हेल्प
the browser to display the content correctly. Okay, so content जहाँ भी हमर देखो ठीक रे देखा जीवो and आउ कोन it makes the content available to the JavaScript and CSS हैला हमें जो एटा हमें सेकंड यूनिट रे पढ़िबो CSS और JavaScript सेटा भी ठीक रे हमको देखा जीवो बोले how again markup हमें ठीक रे if we arrange the markup properly search engines को भी सेटा ठीक रे देखा जीवो so if तमे गोटे वेबसाइट डेवलप करछो सेटा गूगल रे भी ठीक रे इंडेक्स सब है ना पर्टिकुलरली देखा जीवो से तापर हमें we looked at what is the content of a HTML element है ना तो HTML element भितर कौन कौन था फर्स्ट हमें देखिलो टैग ताको कहा जाए टैग कौन द नेम ऑफ द एलिमेंट इन एंगल ब्रैकेट तो एटा जो ब्रैकेट रे देखो छ एटा एलिमेंट नेम तो टैग गोटे ओपनिंग टैग था आ गोटे क्लोजिंग टैग था सो क्लोजिंग टैग केमते जानिबो हमें से ना भितर गोटे स्लैश ना भितर गोटे स्लैश थबो so this is the closing tag so there is an opening tag and a closing tag and भितर we have the content written over so एटा हम एक एग्जांपल देखो छ h1 black goose bistro so एटा होछ तमर कंटेंट h1 होछ तमर एलिमेंट हैला आ एटा ओपनिंग टैग एटा क्लोजिंग टैग so जहां भी मोस्ट ऑफ द html एलिमेंट्स जहां देखो हमें is generally in this form हैला गोटे ओपनिंग टैग था गोटे क्लोजिंग टैग था आ मझे तार कंटेंट था आउ टोटल जिनस को माने तुम ओपनिंग टैग रु क्लोजिंग टैग जाए इंक्लूडिंग द कंटेंट इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट HTML एलिमेंट ओके केतरा एलिमेंट आर एम्प्टी केतरा एलिमेंट आर एम्प्टी माने there is no content okay there is no content how the purpose is a simple directive माने command directive में भी command basically trying to tell कि तारो तारो गोटे कौन गोटे मीनिंग था फॉर एग्जांपल हम गोटे एठी देखु बीआर बीआर अर्थ होची न्यू लाइन सो बीआर इंसर्ट्स अ न्यू लाइन कैरेक्टर तो ये लिखा है संबलपुर यूनिवर्सिटी बीआर ज्योति बिहार तो बीआर माने न्यू लाइन सेटा नेक्स्ट लाइन को पड़े जिवो हैला तापर हम देखिलु एट्रिब्यूट विषय what are attributes हम ऐड करो एलिमेंट भितरे so these are instructions to clarify or modify an element हैला so element भितरे हमरो attribute था attribute equal to value था ठीक अछि so attribute how value था आ भितरे over okay so all right I hope तमन बुझि पारछो then let us see move on to the next one okay so एठी गोटे हम एग्जांपल देखु छ ऑफ एंकर टैग हैला एटा हम परे देखिबा जब हम हाइपरलिंकिंग विषय कथा हबा so anchor element एठी अछि href is the attribute okay href is the attribute आ एटा तार वैल्यू हैला हाइपरलिंक आ तार वैल्यू so एटा मु लास्ट टाइम तुमको बुझाइथिली a is the opening tag एठी closing tag रहला एटा attribute रहला हमर href equal to एटा attribute रहला and ए टोटल को कहा जाए ओपनिंग टैग एटा होची क्लोजिंग टैग आ मझी रे ए क्लोजिंग ब्रैकेट आ ए आर ओपनिंग ब्रैकेट भितरे जा अछि एटा होची हमर कंटेंट हैला सो दिस इज व्हाट एन एट्रिब्यूट लुक्स लाइक आ केतर टाइम रे I mean there might be multiple attributes so there can be more than one attribute in a tag and they are separated by spaces and they can go in any order माने मल्टीपल एट्रिब्यूट्स है पारे तांको भितरे गोटे एट्रिब्यूट भितरे आ गोटे एट्रिब्यूट भितरे स्पेस था गोटे स्पेस था आ आको हमें वो भी ऑर्डर रे हमें दे पारो सो एटा भी हमें देखिछु ओके so generally most attributes take values which follow a equal to sign so always गोटे equal to sign था and हमें एमती लिखो एट्रिब्यूट नेम आ तार वैल्यू केतरा एट्रिब्यूट सिंगल वर्ड्स भी था सेटा हमें देखि पारबो ओके आ गोटे जिनस हम देखु छु इस कोटेशन मार्क आर स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड आर नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड बट रिकमेंडेड फॉर कंसिस्टेंसी सो एई एग्जांपल रे जेमते देखु छु हमें डबल एठी डबल कोट्स दउ छु एठी डबल कोट्स दउ छु so these are some things that are insisted upon hala eta lekhile bolo so the browser does not confuse them
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଜ୍ HTML जो हमर एलिमेंट सब दे कैन बी नेस्टेड हैला ता माने होचे गोटे एलिमेंट भितर आ गोटे एलिमेंट हमें दे पारिबु हां वी कैन कीप ऑन एडिंग नेस्टिंग एलिमेंट्स हैला दैट इज पुटिंग एलिमेंट्स इनसाइड अदर एलिमेंट्स एटा हमें करि पारिबु बट मेक श्योर दैट देयर इज नो ओवरलैप देयर इज नो ओवरलैप जेमति कि एथि div खोला है एठी div क्लोज है ता div भीतर कौन अच्छे हमर हेडिंग अच्छे हेडिंग 1 हेडिंग क्लोज पैराग्राफ ओपन पैराग्राफ क्लोज एम्फसाइज सो बेसिकली हमें ताको गोटे बॉक्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करबा सो मे बी थिंक ऑफ दिस एज द div बॉक्स हला एटा होचे हमर div बॉक्स आ भितर तापर हमर गोटे भाबी दियो एटा होचे हेडिंग रो बॉक्स h1 रो बॉक्स हला h1 रो बॉक्स आ भितर होचे पैराग्राफ रो बॉक्स हला पैराग्राफ बॉक्स आ भितर हमर गोटे अछि em रो बॉक्स सो एटा ए भलिया नेस्टिंग हे परिबो हला सो दिस इज आल्सो वेरी मच पॉसिबल आ गोटे जिंस हम देखितलो इज वी कैन ऐड HTML कमेंट्स हला कमेंट्स रो पर्पस एटा होछि कि इफ तुम कोड जनरली तुम अनका प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे पढ़िथिबो we add comments so that for a you are reading your code you know that it kahinki kara hai so you can get an idea about that or if a third person is reading your code okay so tama code paduchi he will be able to know why that piece of code is there over here ଆମେ comments କେମିତି ପକଉଛୁ greater than exclamation mark ଦୁଇଟା hyphen और क्लोजिंग रे दुईटा हाइफेन और दी ग्रेटर देन सो एटा भी हमें दे पारछु एंटी हमें HTML कमेंट कर तापर हमें देखिलु गोटे मिनिमल HTML भितर कोन कोन थिबा कथा हमें देखिलु डॉक टाइप HTML टैग ता भितर हेड बॉडी एटा हमर एटा इवन मिड टर्म रे भी क्वेश्चन पकैथिलु व्हाट इज द मिनिमल HTML डॉक्यूमेंट हमको देबो पड़िबो सो एटा हमें देखिलु आ हमें ऐड करिछु तो एटा और एक्सप्लेनेशन को मु बेसी जिबिनी because we have already started this मु एते सर जिबिनी हैला सो आमो केस रे हम देखिलु कि हमर जो कंटेंट थिला हमर फर्स्ट सेकंड पेज रे ताको हमें HTML रे पुट कर देछु एटा डिस्प्ले करले भी we don't get anything हैला so nothing changes जहा थिला सेमती ही अछि सब गुडे एमती रखा है but later on what we can do is हमें टिके मार्कअप ऐड करबा एठरे हैला कोन एठी मार्कअप ऐड करले हम एठी h1 ऐड करले h2 ऐड करले एठी पैराग्राफ ऐड करले h2 एठी पैराग्राफ h2 पैराग्राफ हैला सो हमें एठी एलिमेंट सब ऐड कर देछ ओके so now the browser will be able to display it properly अब देखो एटा so एठी हमर heading हैला h1 h2 तो so there is a structure to it so the point behind telling you this is the purpose of HTML is to add meaning and structure हैला एटा is very important so HTML हमर काहे की यूज बाय to give the structure it is not intended to describe माने तार जो केमती देखा जीवो है सेटा तार HTML तार पर्पस नो से HTML is meant for giving structure CSS आमे जोटा सेकंड और थर्ड यूनिट रे पढिबा सेटा that is meant for look and feel तो तार प्रेजेंटेशन पर डिपेंड कर हैला आ गोटे हम जस्ट देखितलु ब्रीफली देखिलु डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एटा गोटे API हैला so this DOM allows you to write code माने हम JavaScript लिखि कि हम HTML को भी मॉडिफाई करि परिबा so that is the purpose behind all of this हम तापरे देखिले कि HTML elements can be divided into block level elements and inline elements block level elements माने कौन so these block level elements they take up rectangular blocks हैला they take up entire rectangular blocks inline कौन it appears in the flow of the text एटा गोटे हम देखुछु एठे एग्जांपल ब्लॉक लेवल एलिमेंट जब हम h1 लिखुछु कि पैराग्राफ लिखुछु से माने पूरा से ब्राउजर विंडो रो पूरा स्पेस नहीं जाते हैला पूरा स्पेस नहीं जाते बट इफ हम em लिखुछु कि इटैलिक्स बोल्ड से बढ़िया
एलिमेंट लिखुचे से से टेक्स्ट जेतिक अच्छी और कंटेंट जेतिक अच्छी ता अराउंड रे से था। तो इनलाइन एलिमेंट्स फिट इन alongside other elements, so अन्य एलिमेंट माने सही लाइन रे ही थिबे। But if you take a block level element, they take up the whole block of space. पूरा space टा ସେମାନେ नहीं जानते। So that is the major difference between block and inline। और जब भी हमें जहाँ भी नुआ HTML पढ़ुଛୁ, make sure that you know कोटा block कोटा inline है ना, कोटा block कोटा inline तुम्हें जमते हेले देखिबो। सो एठी एई पिक्चर रे तुम देखि पारछो ब्लॉक लेवल एलिमेंट सब एटा h1 होची ब्लॉक, h2 होची ब्लॉक है, पैराग्राफ होची ब्लॉक, h2 h2 এটা প্যারাগ্রাফ, এটা जो এটি আমি আইটালিক্স লিখিଥିଲୁ em এটা হচ্ছে কোন কোন তক ইনলাইন এলিমেंट অফ। ମୁଁ ଟିକେ तुमको विजुअल स्टूडियो कोड ଦେଖେଇବି। ओके, तो ଏଇଟା ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଟିକେ zoom ଯାଇକି ଦେଖା, এইটা ବୋଧେ ତମେ ଦେଖି ପାରୁଥିବ। ଏଇଟା ହଉଛି this is my कौन कौन थे विजुअल स्टूडियो कोड विंडो है। दिस इज माय विजुअल स्टोर्ड कोड विंडो, जहाँ आम कंटेंट देखी कौन देखी आमर ब्राउजर जोटा देखी आम जोटा तुम देखुच ये ब्राउजर यहाँ देखुच आर HTML है, आर HTML आम मु तुमको देखा केस है, जस्ट चेक दैट आउट। सो एठी तुम देखि पारछो h1 क्लोज, h2 पैराग्राफ, h2 पैराग्राफ em एठी रहला। और माने सब आम टिके नेक्स्ट मैं देखिबा पर एटा हमर h2 रहला, एठी पैराग्राफ अछि, ठीक अछि। सो दिस इज द एंटायर थिंग। आपको हमें इफ हमें आपको देखु जो ब्राउजर रे देखिबा को टिके ब्राउजर रे, लेट्स सी स्ट्रोक को देखिबा ब्राउजर रे, ये एटा भी देखि पारुछ तुम। सो सॉरी, तो एटा देखि पारुथबो। सो वी आर हैविंग द हेडिंग, एठी तमरो हेडिंग 2 मतलब कंटेंट, एटा हमर ब्राउजर रे एटा एमती देखा जाउछ, ठीक अछि। ऑलराइट, ऑलराइट, okay, ठीक है। So next, let us check out. So HTML is only for describing structure, not the presentation. Well, presentation is controlled by CSS. एटा हमें second unit रे देखिबा। And browsers have their own style sheet, माने default जोटा style तुम देखि पारछो सेटा ब्राउजर रे ऑलरेडी था, बिकॉज़ सेथिले कि तुम से ब्लैक एंड व्हाइट जहाँ भी देखो दैट इज ऑल ब्राउजर्स डिफॉल्ट स्टाइल जहाँ भी तार एक्जिस्टिंग था, तुम नीचे भी तुम निज स्टाइल लिखि पारिबो। सो दैट इज दी CSS ओवर हियर। एटा जहाँ मैं देखिलु आउटपुट भी जहाँ देखिलु, तो एटा जहाँ अच्छी आर स्टाइल is by the built-in style sheet of the browser। ब्राउजर जहाँ भी built-in style sheet थिला सेटा ही देखा जाउची ए केस रे। तो ये स्लाइड टा जस्ट सारिबा पे वी विल जस्ट टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। कौन कौन एरर्स जनरली आमे जब वेब पेज डिजाइन करू, इफ यू आर राइटिंग द HTML योरसेल्फ आमे नीचे HTML लिखुछ कौन कौन भूल हो पारे। तो स्मॉल मिस्टेक्स एंड मिसिंग कैरेक्टर्स मे कॉज द HTML टू ब्रेक। तो अन्य जो तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम सब पढ़ी HTML C हो कि जावा हो, so all of these languages, these are all compiled languages। so मैं ताको compile करूँ and then you are giving the compile time रे सब ठीक थिले, then only it is able to execute, whereas HTML is not so। whatever be the content, okay, whatever you are writing, you can directly double click and visualize in the browser। so even if there is a mistake, it will display, okay, it will display। अब हमें ऑलरेडी देखी सारी कि से व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर दिए
जोटा से बुझी पारनी ताको भी इग्नोर कर दिया, सो इट डज लाइक दैट। आउ कौन मिस्टेक्स है पर देखिबा टिके मेनली especially in the हमें ए स्लैश टा भूली जाओ, so missing a closing tag, maybe हमें closing tag दोनों कि missing closing bracket in the tag, either a bracket or something, so either of this हमें किसी भी छाड़ी देता हो। missing quotation mark around a attribute value, so attribute value हमें कहली, so attribute equal to value था और value around रे हमें double quotes use करଛୁ, so केते केते बेले हमें एटा दोनों केते बेले हमें we are missing these things also, so this causes errors, okay, this causes errors also। हाँ गोटे सब बड़ प्रॉब्लम देखा इज नॉट सेविंग योर डॉक्यूमेंट बिफोर व्यूइंग इन द ब्राउजर, माने एबे सपोज मु ए विजुअल स्टूडियो कोड रे मॉडिफिकेशन कर देबी बट मुझे सेव करें और डबल क्लिक करके ब्राउजर रे देखी, सो दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम दैट मेनी पीपल फेस। सो अपडेट न करके देखा जो सो दे थिंक दैट द चेंज इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम दैट दे फेस। एटी गोटे एग्जांपल हमें देखिबा, सो व्हेन a slash is omitted the browser does not know when the HTML ends, so ए केस रे हमें देखिबा एटी जेमति लिखा छै केटरिंग you have fun we will handle the cooking है, so ए em जो थिला एटी गोटे स्लैश em हेबा कथा, बट एटी देखो कोन है खाली em लिखा है स्लैश टा मिसिंग अछि, सो कोन होबो बेसिकली जो आइटैलिक्स हेबो से समस्त को हो जो, सो we will handle the cooking एटी बंद हेबा कथा, बट एबे आइटैलिक्स पूरा कंटेंट आइटैलिक्स हेबा, so from here to this end everything has now become italics, but this is not we want, हमको दरकार थिला कि एठी एठी हमें स्लैश देबा कथा, एठी स्लैश देले we'll handle the cooking टा ही italics है था, बट एबे पूरा नहीं italics है, so this is one kind of error that you might face over here। आउ गोटे आम एरर देखु इज मिसिंग एंड ब्रैकेट मेक्स द ब्राउजर इंटरप्रेट ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टर एज पार्ट ऑफ द टैग, सो यही केस रे h2 इट स्लैश आई जो ब्रैकेट थिबा कथा h2 ब्रैकेट द रेस्टोरेंट है ना, बट मु एबे h2 संग एटा एबे सेम हो जाय छै h2 द रेस्टोरेंट, सो एठी देखो डिस्प्ले रे आसु ना, दिस इज नॉट बीइंग डिस्प्लेड आसु ही ना the restaurant आसु, so that is one problem फेस करो if we are not adding the proper end bracket, एटा एमती हमको एटा एमती देखा है। सो ए स्लाइड रो एंड करबा आगु बिफोर आई एंड दिस स्लाइड आउ केतरे जिंस हम कहबी, सो आम जब HTML बनाऊँ वी नीड टू वैलिडेट है, ये वर्ड बार बार मु यूज कर वैलिडेट अर्थ हो हमको चेक करबा दरकार, to validate a document to make sure that you have abided by the HTML rules and there is no errors। कौन कहते तुमको is by default whenever we are trying to display our HTML, so भूल थिले भी the HTML will get displayed on the browser, है भूल थिले भी it will get displayed, so भूल को अवॉइड करवा to remove the errors we must validate the document। आगु हमको कौन कौन करबा दरकार, आई जस्ट मेड अ चेकलिस्ट। फर्स्ट होची इंक्लूड द डॉक टाइप डिक्लेरेशन, डॉक टाइप रो आई मीन कौन पर्पस कौन हमें ऑलरेडी देखिछु, डॉक टाइप इज टू इंडिकेट द टाइप ऑफ HTML यू आर यूजिंग, ଆଉ आजिकली हम HTML5 यूज करछु, सो डॉक टाइप HTML लिखिले इट विल इंडिकेट दैट हमें HTML तमें यूज कर। आगोटा होची इंडिकेट द कैरेक्टर एनकोडिंग, हमें सेटा हमें पढ़िथिलु कि आजिकली इफ यू आर यूजिंग माने यूनिकोड हला कि अन्य कैरेक्टर लिखुछ यू शुड स्पेसिफाई द कैरेक्टर एनकोडिंग ओवर हियर है ना, सो जस्ट मु तुमको एटा देखे देबी हम लेट्स सी दिस ओवर हियर, तो मैं एटा देखि पारथो मोर विजुअल स्टूडियो कोड विंडो एटा देखि पारथो, सो ए केस रे तुम देखो आई एम एठी मु गोटे जिंस कर मेटा कैरेक्टर सेट इज UTF-8 है, दिस इज शोइंग द एनकोडिंग, माने मु कहूची कि मु यूनिकोड UTF-8 यूनिकोड यूज करूची ए केस रे है, सो दिस इज
the meaning of specifying the character encoding over here. How gote is include required attributes. For example, आमे ପରେ देखिबा image आमे केमती यूज करबा. image रो गोटे हमर image tag होची. image tag रो गोटे attribute होची src. हैला without src image tag टा काम करिवो. So basically जो भी आमे एलिमेंट लेखुछु तारो रिक्वायर्ड एट्रिब्यूट्स हमको देवा दरकार. हैला try to do that always. तापर don't use non standard elements. जो एलिमेंट गुडा सब ब्राउजर एक्सेप्टेड नहोंती ता सेटा यूज करनी. डोंट मिसमैच टैग्स. हैला if पैराग्राफ ओपन करछ पैराग्राफ क्लोज करो. डोंट माने आउ किछि क्लोज करनी ता. नेक्स्ट एलिमेंट्स करेक्टली. सो नेस्टिंग जोटा हम कथा हेतलो कहा भितर कोटा रहिबो. सो दैट इज टू बी डन प्रॉपर्ली. चेक फॉर टाइपोस एंड माइनर एरर्स. टाइपोस माने स्पेलिंग मिस्टेक्स. स्पेलिंग मिस्टेक्स. सो आइदर तुमर कंटेंट रो स्पेलिंग मिस्टेक कि टैग रे स्पेलिंग मिस्टेक हेबा कथा ना. हैला सो बिफोर वी क्लोज एटा हम गोटे टूल देखि परिबा. दिस इज कॉल्ड एज अ वैलिडेटर टूल. हैला ए टूल रे तुम कोन करि परिबा. तुम एचटीएमएल जहा लिखिछ सेटा तुम अपलोड करि परिबा. अपलोड करके तुम चेक करि परिबा सब ठीक अछि ना. फॉर एठी मु लिंक टा देछि. तुम एटा परे चाहिले एटा क्लिक करके भी जाई परिबो ए केस. हैला सो html5 validator.nu एटा गोटे वेबसाइट. हैला तुम एटा देखि परिबो ए केस. अच्छा अनएबल टू वे देखिबा. सपोज html5 validator एटा हम छिबा. ओके html5 validator को टिके विजिट करबा. हमें 7 is it not taking there. So the html5 validator को छिबा. validator.nu सो ये देखी पार तुम यहाँ हूँ तार वेबसाइट. आठी तुम कौन दे पार. आइदर तुम तार इफ तुम ऑलरेडी को वेबसाइट रो होस्ट होइछि सेटा डायरेक्टली यूआरएल दे पारिबो कि एटी फाइल अपलोड करि पारिबो कि तार कंटेंट डायरेक्टली एटी पेस्ट करि पारिबो. तो मु कोन करबी मो कंटेंट डायरेक्टली पेस्ट कर देबे एटी. देखियो एटी ठीक अछि. सो और कंटेंट एठी आने कि मु पेस्ट कर देबे. ठीक अछि. आउ एठी मु क्लिक करबी वैलिडेट. So एठी देखो. So it is telling the document is valid html5 aria over here. So सब ठीक अछि. सपोज एथिरे टिके एरर करबा. सपोज मु एठी h1 ए स्लैश टा उडे दउछु just to validate. So immediately देखो it tells you that there is an error. So there is an error. Immediately से error टा देखे दउछु. हैला heading cannot be a child of another heading. हैला so एथिरे हमको से कहि दउछु. इमिडिएटली तुम एटा चेक करि पारि. हैला सो ए ग्रीन टा आसीबा कथा. ओके सो आई होप ए पार्ट समस्तंगर क्लियर हो जाई छी. html बेसिक्स कहा को किछि पचारिबार अछि तुम अनम्यूट करके पचारि पारिबो. एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क. एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क तुम पचारि पारिबो. Any questions? Okay, if not, next slide को जिबा. So I want to deal with HTML. है एबे हमें HTML को टिके ब्रॉडली देखिबा कोन अछि कोन नै.
ओके ଆଉ କାହାକୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବାର ଅଛି? ନାଇଁ? ओके तो स्लाइड को देखिए हमें ऑलराइट सो hypertext markup language में सो एबे एबे कौन देखिबा हमें जहाँ एबे देखिले आगे is basically an introduction, just an introduction to a few of the things ହେଲା, tags and all, but एबे what we will do is we will specifically look at each of these tags ହେଲା, how do these tags operate, कौन कौन आ भीतर थाए हमें एटा एबे देखिबा over here ठीक अछि। so let's see. Okay, so to start with, a picture को always मन रखा. So we are over here now. Okay, now currently we are over here. We are talking about HTML. Okay, we are talking about HTML. Our मन रखो HTML. The purpose of HTML is structure. That is जहाँ पे तुम्हारा content अच्छी, तार structure दबा पाए we use HTML. तापर हमें सेकंड और थर्ड यूनिट रे हमें फोकस करबा CSS और JavaScript. CSS रो काम होला प्रेजेंटेशन हैला, तो ताकू कुहा जाए लुक एंड फील हैला, लुक एंड फील. सो बेसिकली HTML रो स्ट्रक्चर हला पर सेटा केमते देखा जिवो, को कलर यूज होबो, कोन फॉन्ट यूज होबो, सेटा को CSS रे देखा जाए. एंड फाइनली JavaScript रे बिहेवियर हैला, बिहेवियर देखा जाए. तो बिहेवियर माने ड्रैग एंड ड्रॉप हो कि जहाँ एनिमेशंस देखो जहाँ भी देखो सेटा सब JavaScript. So HTML is the foundation, that is the structure on which you have the CSS and JavaScript on top. Okay, so this is eight जिनसा को पूरा you remember. Okay, so और जब भी हमें HTML page draw करो, make sure that you don't use uh, HTML, don't focus on the design. HTML तुम खाली देखो कि structure ठीक है दरकार. If the structure is good, you can add presentation and behavior later on. Okay, so next up what we have, let's see. So hypertext markup language, this is the full form, it's a markup language. So this is only one markup language. There are lot of other markup languages as well. For example XML, XHTML, it is a अन्य markup language. बट आमे एटी HTML देखो आर गोटे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अच्छे, टैग्स अच्छे, सेटा यूज करके आमे पेज डिजाइन कर. सो दिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डॉक्यूमेंट है ना. सो दिस इज द पर्पस ऑफ HTML. So to write HTML we pick from a set of standard elements. So आम ए पर्टिकुलर स्लाइड रे आमे देखिबु ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट्स कौन कौन एलिमेंट्स एग्जिस्ट करूछि. हमें ऑलरेडी केतरा एलिमेंट्स देखि सारी छु, पैराग्राफ हो, हेडिंग हो, एटा हमें ऑलरेडी देखि सारी छु. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ टेक स्पेसिफिकली गोटे गोटे हमें पढ़िबा भितर ओवर हियर हमें देखिबा पैराग्राफ, हेडिंग. so these are some common elements, paragraph, heading, image, format, common elements हमें, बट एठी गोटे गोटे करके हमें बुझिबा behind all of this. So we create elements by writing tags. Okay, so एटा हम ऑलरेडी देखिलु, ओपनिंग टैग था, क्लोजिंग टैग था, ता भितरे हमें कंटेंट दोछ, ता भितरे हमें कंटेंट दोछ. So most elements consist of opening and closing tag. केतरा, not all, केतरा empty elements भी था या भितरे. So हमें एठी गोटे एटा गोटे हमें एग्जांपल देई कि हमें बुझिबा एटा. फॉर एग्जांपल एटा देखिबा हमें भुवनेश्वर विकिपीडिया पेज है ना, भुवनेश्वर हमें विकिपीडिया पेज टा हमें टिके देखिबा over here. Open link in a new tab.
भुवनेश्वर विकिपीडिया पेज देखिए सब बंद कर दे ओके अच्छा तो तुम ଏବେ देखि पारुथबो दिस इज द विकिपीडिया पेज ऑफ sorry yeah this is the Wikipedia page for Bhubaneswar ହେଲା so जो भी विकिपीडिया पेज तुम एटा देखि पारुथबो भुवनेश्वर लिखा हेतबो एठी गोटे फ्रॉम विकिपीडिया लिखा हेछि एठी गोटे पैराग्राफ अछि हला एठी टेबल ऑफ कंटेंट्स एठी अछि लिस्ट गोटे अछि देखि पारुछ तुमे तापर एठी तमरा छोटो छोटो पैराग्राफ सब अछि आ भितरे भितरे यू कैन सी सम इमेजेस एज वेल ओवर हियर हला सो आम चेष्टा करवा कि ए पेज को आम रिक्रिएट करवा आम आम विजुअल स्टूडियो कोड यूज करके आम ए पेज को आउ थे आनीपर तो बिफोर आम देखा आम टे आर कौन कौन आम यूज कर देखा टे तुम जो भी ब्राउजर यूज कर हाँ तार गोटे एमती फीचर थाए राइट क्लिक कले तुमको गोटे ऑप्शन देखाए इज इंस्पेक्ट है इंस्पेक्ट अब इंस्पेक्टर क्लिक कले तुमको से तार गोटे एमती डेवलपर टूल बारटा देखे डेवलपर विंडोटा देखे है सो एठी गोटे ऑप्शन एमती अच्छे सो यू कैन जस्ट पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर क्लिक कले तार HTML टैगटा से देखे देबो एटा देखो भुवनेश्वर जहाँ लिखा है एतरे दिस इज अ H1 हैला दिस इज अ H1 भुवनेश्वर बोली लिखा है हैला तापर सपोज आमे देखिबा एठी एटा देखिया पैराग्राफ भुवनेश्वर हैला एठी क्लिक कले एटा पैराग्राफ गोटे बाहर सो दिस इज द थिंग भुवनेश्वर पैराग्राफ गोटे बाहर छै सो एटा हमर कंटेंट अछि हमें टिके नै कि आपको ताको रिक्रिएट करबा हम केस रे ओके हैला आउ एई जो हमें रिक्रिएट करबा सेथरे हमें चेष्टा करबा टू चेक आउट ऑल द डिफरेंट फीचर्स ओके तो एठू हमें तरह जिनस हमर एठे नै गला हो मिनट दिया हम नहीं पारे एथरे के फोटा टिके पर देखिबा सो तुम ये HTML विषय वेयर डू यू हैव टू रीड है को रिसोर्स तुम पढ़ो ता विषय मुझे कहबी तो वी विल रीड तुम टेक्स्ट बुक वुड बी दिस Mozilla Developer Network ताकू माने also it is called as MDN MDN Mozilla Developer Network तार documentation reference ये link देइछि मु आर गोटे अच्छी references and guides references under HTML look for element references है सो एटा हम टिके देखिबा let me open in a new tab है आपको this is the MDN है एठी गोटे अच्छे हमर references and guides एठी I think references रे हमर अछि HTML वेब टेक्नोलॉजी रेफरेंस है HTML भितर हमर आई होप एटा थिला references under HTML look for element references element references HTML element references ओके एलिमेंट रेफरेंसेस है एठी तुम देखि परिबो ओके एटा एटा होछ तुमर सब गुडा एलिमेंट देखि पारछो तो रूट एलिमेंट HTML हां एटी हेड लिंक मेटा आ तापर देखु हम बॉडी
बॉडी भितर कौन आसो एड्रेस आर्टिकल साइट नाव टेक्स्ट बहुत गुड़ा एमती अच्छे है तो आ भितर आम केतरा जिनस ही पढ़ू सब गुड़ा पढ़ूनी यू विल ओनली लुक एट सर्टेन image certain tags from within this over here तो ये मन रख लिंक टा मु शेयर करुच्ची चैट रे प्लस एटा स्लाइड रे भी थिबो so make sure that you check this out as well chat रे मु पेस्ट करछी go MDN is called as MDN so एटा हमें HTML पे यूज करिबा so just click on this and आपको तुम सेव भी करि परिबो so that later on तुम एटा HTML पे हमें देखि परिबा बोले है right getting back over here हमें एटा देखिबा okay so obviously any HTML page बनेबा को we need a boilerplate है so basic हमर जोड़ा थिबा कथा सेटा हम करिबा so let us go down to our terminal सब बंद करदबा हमें गोटे नुआ पेज बनेबा एतरे let us call this as bbsr it is a folder with bbsr.html है so एथरे आमे भुवनेश्वर विकिपीडिया पेज बनेबा so एटा this is the boilerplate जोटा तमे एथरे देखि पारुछ है एटा जो कहूँ boilerplate so मते विजुअल स्टूडियो कोड रे एटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए ठीक अछि ऑलराइट नेक्स्ट आमे टिके देखिबा पेज को विकिपीडिया पेज को टिके जाई के देखिबा तार कोन कोन अछि तो एटा विकिपीडिया पेज तुम देखि पारथबो एठी विकिपीडिया भुवनेश्वर लिखा है एठी भुवनेश्वर विकिपीडिया लिखा है ना सो मु भी एटा इंक्लूड करबी एटा कोठी इंक्लूड करि परिबी इज ए जो टाइटल देखु जो डॉक्यूमेंट ओके डॉक्यूमेंट देखु जो ए जगह रे मु लिखिबी एठी सॉरी डॉक्यूमेंट उठे के मु एठी आनिबी भुवनेश्वर विकिपीडिया टाइटल थिला सेटा नहीं आसबो तापर देखिबा आ कोन हम आनि परिबा एतरे तो ए जिनस को पूरा नहीं आसबा है वो हम पेस्ट कर दबा बॉडी भितर कौन करुच्ची इज विकिपीडिया पेज रु आनिकी आई एम पेस्टिंग इट ओवर हियर एटा देखि पारथबो तमे एटा मु पेस्ट करछि विकिपीडिया रु नै के आनिकी हैला आउ आउ केतरा पैराग्राफ पे के आसीबा विकिपीडिया पेज रु एटिमोलॉजी और हिस्ट्री ना एटा भी मु नै कि जाए और एठी दे दबा हिस्ट्री ओके आउ बोधे आउ गोटे पैराग्राफ आनले ठीक हबो आस ज्योग्राफी
केतरा आम नहीं जबा ए एतरा पेज ए कंटेंट को आम निजे एठे क्रिएट करिया ठीक अच्छे एते बहुत है कंटेंट बहुत अच्छे एतरे कंटेंट बहुत अच्छे आपको सेव करवा सेव करके सपोज मु आपको देखा चाहूँगी आई वांट टू सी केमती देखा जीवो एबे तुम देखिथिबो आम ए केस रे किछि एचटीएमएल नाही खाली जहाँ ऊपर अच्छी HTML तले और किसी ना तो आकु इफ आई डू विजुअलाइजेशन केमती देखा जीवो एटा देखिबा हमें psr.html एटा तुम देखि पारथबो जहाँ में लिखिथिलु एटा खाली गोटे टोटल ब्लॉक ऑफ कोड पळे आसिला एटा टोटल एटी ब्लॉक ऑफ कोड पळे आसी सो आमे कौन करूँ आज मुझे ऑलरेडी 3 मिनट खाली अच्छे तो मुझे रही नेक्स्ट क्लास आम गोटे गोटे आम यू पढ़ा है आम गोटे गोटे एलिमेंट पढ़ा ता विषय पढ़ी से मार्कअपटा ऐड कर सो आई स्टॉप हियर क्या किसी पचार अच्छी तो पचारि पारिबो